कि instead of my father, had my mom passed away, God forbid, my father wouldn't have been able to raise two boys. But I also think, और मैं बहुत seriously कह रहा हूँ, कि जो माँ कर सकती है वो बाप कभी नहीं कर सकती। ये जब भी भाजपा वाले मुझे कहते हैं ना तुम देशद्रोही हो, पाकिस्तान चले जाओ, मैं टॉक टू द हैंड। NCP would always weaken Congress. And I would always tell people, I mean, he's weakened the Congress. And he always did all of this. आपको मोहब्बत करना नहीं आता, हमें मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता। आपको मोहब्बत करना नहीं आता, हमें मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता। जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, एक आपको नहीं आता, एक हमें नहीं आता। Make love in the gym. Oh my God! ये पूरा इसको ये हिट हो गया। This podcast is a blockbuster. कहते हैं विजडम से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती, और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो उसी विजडम को बखूबी एक्सप्रेस करना जानते हैं। वो लॉकअप में भी जा चुके हैं, लेकिन बिग बॉस के और कंगना रनौत के लॉकअप में वो जा चुके हैं। इन्हें आपने कई सारे न्यूज चैनल्स पर डिबेट करते हुए जरूर देखा होगा, इसीलिए ये रियलिटी शो और न्यूज चैनल्स पर भी हमारे फेवरेट हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिस्टर तहसीन पूनावाला की, जो एक एंटरप्रेन्योर है, एक्टिविस्ट है और पॉलिटिकल एनालिस्ट है। तो अगर आपको जानना है एक नेता और अभिनेता कैसा होता है, तो ये पूरा एपिसोड देखिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को इन्होंने निशाना बनाया है। सो जरूर देखिए द entire episode of Lifey Talks with Raavya Sarda. Hello Tehseen, welcome to the show and thank you so much for your time. I'm so happy you are here. How are you doing? Life is magnificent, brilliant. Hakuna Matata. Life is fabulous. Oh, what is Hakuna Matata? I mean, I have heard this song. Hakuna Matata. Yes, the Lion King. The Lion King song. Correct. And it's also a very famous line from Lion King. Okay. So it's actually Hakuna Matata is Swahili from East Africa. Okay. It's a language in East Africa, Swahili. And it means that life is brilliant. Life is very good. So Hakuna Matata is also a very famous song for Kenya and Tanzania. It's one of their most famous songs. And I love the song. Okay. It's in Swahili. I really believe my life is brilliant. So I always say life is brilliant, Hakuna Matata. And I love Africa. So I should also say Hakuna Matata. I mean, you life should always is brilliant. say life is brilliant. We have, and honestly, we have a brilliant life. So my life is fabulous. Absolutely good to hear this also. But tell me something, why politics? I mean, look at your sense of style. It's fabulous. You're, I think, one of the fashion icon in politics also. Why politics? You can go in movies also, you can go in, fashion industry also. Why politics? Because मुझे politics समझ में आती है, मुझे movies और fashion समझ में नहीं आता। अब lot of people से आपकी fashion style ठीक है, अच्छी है। Honestly, it's credit to my stylist or my wife. Okay. मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता fashion. तो क्या पहना? Even today, when I had to come here, wife told me, ये पहनो, black पहनो, कैमरा पे अच्छा लगेगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है. Okay. I'm really telling you. Okay. And movies का मुझे शौक नहीं है. I like reading. I'm not a movie buff. Though a lot of my friends are in the film industry and a lot of them I absolutely love and adore them, but I'm not a movie person. Okay. And why politics? Because why not politics? देखो, एक्टिंग तो पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा एक्टिंग तो पॉलिटिक्स में होती है और सबसे ज्यादा फैशन भी आजकल पॉलिटिक्स में होता है। अब मैं ऐसे पॉलिटिकल नहीं कर रहा हूँ, बट क्रिटिसिज्म प्राइम मिनिस्टर का क्या होता है, क्रिटिसिज्म बाकी मिनिस्टर्स का क्या होता है, और विपक्ष के भी, राहुल जी का क्या होता है, 80,000 का टी शर्ट पहने, ये फैशन इज इन पॉलिटिक्स एंड एक्टिंग इज इन पॉलिटिक्स. Politics is the best actors are politicians and they're also the most fashion icons. Oh my God, yes, I agree to this. And I'm not saying this badly, वरना दोनों राहुल जी और मोदी जी के फैंस हमें ट्रोल करेंगे. But actually, really, and I'm saying this really, अगर आप देखो तो मोदी जी का एक स्टाइल कोशंट है विदेश में. ही कैरीज हिमसेल्फ वेरी वेल एंड यू गॉट टू गिव दैट जैकेट्स एंड ऑल, विद द जैकेट द वे ही कैरीज. राहुल जी का भी एक स्टाइल कोशंट है, वो व्हाइट टी शर्ट के साथ ही द फिट गाय. तो आई थिंक स्टाइल इज गुड, फैशन इज गुड, एंड एक्टिंग तो पॉलिटिशियन से अच्छा कोई नहीं करता है. यस, यू आर अ गुड डिबेटर आल्सो एंड लव्ड ऑन रियलिटी शोज. Correct. So when you go for the debating things on different news channels and all, how is the scenario there? Like we have seen, there are these Pakistani channels and all. तो वहाँ तो literally दंगाई होती है. So यहाँ what is the scene like when you talk to your opposition? What happens afterwards? Debate होने के बाद क्या होता है? जप्पी वप्पी मारते हो या okay?
You don't even look at each other. ऐसे नहीं. So दो चीज को मैं डिवाइड करता हूँ. एक, आपने कहा रियलिटी शोज, न्यूज चैनल से बड़ा रियलिटी शो कौन सा है, डिबेट कौन सा है? वो तो रियलिटी शो में कम से कम डिफर्ड लाइव है. मतलब अगर आप बिग बॉस करते हो तो उसका सुबह एक दिन बाद उसका डिफर्ड लाइव होता है. ओटीटी पे आप रियल टाइम होता है, बट जनरली डिफर्ड लाइव है. ये तो लाइव चल रहा है, उसी वक्त चल रहा है न्यूज चैनल्स पर. तो यू हैव टू बी, इससे बड़ा रियलिटी शो क्या है? लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर से मानता हूँ, एंड हंसी मजाक अगर बाजू में कर दो तो आपकी डिबेट होनी चाहिए, भरपूर डिबेट होनी चाहिए, मजबूत डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का आधार है. डिबेट करो, देयर मस्ट बी डिबेट्स एंड डिस्कशन, बट इट शुड नॉट बी पर्सनल. वाजपेयी जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए. वाजपेयी जी कहते थे कि मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए. तो मतभेद बिल्कुल करो, जमकर करो, मनभेद मत करो. किसी को कम से कम आप इतनी डिबेट में इतनी आपको मर्यादा रखनी चाहिए कि सामने डिबेट के बाद जब आप सामने वाले से मिलो तो आप आंख से आंख मिलाकर उससे बाय कह सको या थैंक यू कह सको. तो व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए. मैं आपको एक फनी इंसिडेंट बताता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ बग्गा ने आपके साथ पॉडकास्ट किया. बग्गा वाला इंसिडेंट है. ओके. अब बग्गा और मैं गए थे शिमला लिट फेस्ट में. तो मैं तो ठीक, मेरा तो सबके साथ ठीक ठाक है. तो ये 2 दिन का लिट फेस्ट था और 2 दिन हमारी डिबेट चल रही थी. तो पहले दिन जो हुआ, इसमें बग्गा और मैं जमकर लड़ रहे थे. जमकर हमने डिबेट में बाद में, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन. आई डोंट हैव एनिमीज इन एनी पॉलिटिकल पार्टी. सारे मेरे दोस्त थे. तो बग्गा और मैं जमकर लड़ रहे थे और मुद्दों पर लड़ रहे थे, कोई व्यक्तिगत नहीं थे, मुद्दों पर लड़ रहे थे. तो वहां पर जो ऑडियंस थी, क्योंकि एक ओपन थिएटर जैसे एरिया में हो रहा था शिमला के अंदर, तो वहां पर जो ऑडियंस थी ये ताने मार रही थी, ये न्यू जनरेशन पॉलिटिशियंस देखो, हर चीज में लड़ते, देश आगे कैसे जाएगा. तो फिर डिबेट खत्म हुआ, वो पर्टिकुलर लिट फेस्ट का शो, और बग्गा और मैं गए. तो मैंने सोचा यार, मैंने कहा यार सुन, ऐसा है कि ये ऑडियंस तो चाहती है कि हम थोड़ी सभ्यता नहीं ना लड़ रहे, क्योंकि ऑडियंस वो कह रही थी आप क्यों लड़ रहे हो, तो सभ्यता रखे, हम नहीं लड़ते. अब अगला दिन नेक्स्ट डिबेट था. तो बग्गा में बड़े प्रेम से बात कर रहे थे एक दूसरे से. वही ऑडियंस अब चिल्ला रही है, ये सारे ड्रामा कर रहे हैं, ये दोनों ड्रामा कर रहे हैं. मैं कंफ्यूज हो गया. हम करे तो करे क्या, ना करे तो करे. पीपल वांट यू टू फाइट, पीपल वांट यू टू डिबेट एक दूसरे के बारे में, या कुछ तो ऐसा डिबेट करो ऑन द प्लेटफॉर्म. आई एग्री. तो वो तो होता है, बट आई थिंक that's what people want, but I really believe it should be respectful. It should not be personal. Personal attacks नहीं करना चाहिए किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना. मुझे लगता है हुआ भी नहीं है ना. हुआ है, कई बार हुआ है. नहीं, मुझ पर होता है, मैं करता नहीं हूँ, अधिकतर मैं करता नहीं हूँ. मुझ पर होता है और मैं उसे स्पोर्टिंगली लेता हूँ. I don't take it seriously. Got it. You were like born in Pune, Pune city, and आपका childhood, there are a lot of memories also. You lost your father at a very young age. You were just 5 years old, and no, I wasn't 5. Shehzad was 5. Shehzad was 5. Yeah. Okay. I was in the 9th grade. Okay, so your mom took care of everything, and the person you are today, your political career or your thoughts and your vision, somewhere your childhood has shaped you in this way. So do you want to say anything or a memory about childhood? I had an amazing childhood. My childhood, Baki, I was brilliant. My dad really loved me. And I was very close to my dad. मैं उनको पॉप्सी कहता था. I was very close to him. And वो होता है ना कि एक रिश्ता होता है, एक फादर सन का रिश्ता. तो हमारा एक फ्रेंडशिप का रिश्ता था. मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा. बहुत उनके साथ मैंने मजाक किए. हम लोग मुझे अब भी याद है, एवरी नाइट ही वुड रीड स्टोरीज टू मी. वी वुड गो आउट. हम सुबह स्क्वॉश खेलते थे, स्विमिंग जाते थे. इन द समर वेकेशंस हम स्क्वॉश साथ में खेलते थे. तो इट वाज एन अमेजिंग रिलेशनशिप. मुझे फिटनेस उनसे मुझे सीखने मिला, बिकॉज यूज्ड टू वर्क आउट. वो सारे एक्सपीरियंसेस अनफॉर्चुनेटली शहजाद को नहीं मिले विद माय डैड, एंड आई ट्राइड टू गिव इट विद माय मॉम. मैं ये चीज बिल्कुल मानता हूँ कि इंस्टेड ऑफ माय फादर, had my mom passed away, God forbid, my father wouldn't have been able to raise 2 boys. Women are phenomenal. Women are much better than men. And now that I have a son, I want to be a good father to him. But I also think, और मैं ये बहुत seriously कह रहा हूँ, कि जो माँ कर सकती है वो बाप कभी नहीं कर सकता. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पॉडकास्ट पे कह रहा हूँ मुझे इस पे अपलॉज मिलेगा. मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, जेन्युइनली कह रहा हूँ. जब जुरवान पैदा हुआ, so Zurwan is a cesarean child, and we knew that we were going to have a cesarean. अब मैं जुरवान को बहुत प्यार करता हूँ. I could die for Zurwan, but would I cut my stomach for him और उससे पैदा करो? नहीं. ये सिर्फ एक महिला कर सकती है. आप मुझे पूछो, आप पेट काटोगे आपकी बेटी के लिए? मैं बोलूंगा नहीं, बस थैंक यू वेरी मच, प्यार बहुत करता हूँ, बट मैं पेट नहीं काट सकता.
this is what a mother can do. ये कोई भी आदमी नहीं कर सकता है. It is impossible. That whether it's labor pain, if it's a natural birth, or that pain in cesarean, cutting, 7 stitches, 8 stitches, you think a man will do it? मुझे थोड़ा सा यहाँ चोट लगता है, मैं ड्रामा करता हूँ, आप पेट काट रहे हो किसी के लिए. It's unbelievable. Women are way better than men and are much more stronger than men. Correct. Not just emotionally and mentally, but women are stronger than men physically as well. Physically as well, yes. Ask a man to go to labor. Tell a man to go to periods. No. Periods, so the pain is different. Exactly. Yeah. So women are way stronger than men. Correct. But then what happens is when you're in periods भी है, कुछ भी है, if you have to go to work. Yeah. आपको सब कुछ करना ही है, आपको बच्चों की स्कूल की तैयारी भी करना है. You just cannot lie down saying that I have a bad stomachache. That's you true. have to wake up. You have to do everything. I mean, you just can't stop there. Actually, अगर आप देखें ना तो प्राचीन भारत था, वो ज्यादा प्रोग्रेसिव था. हमने इसको रिग्रेसिव कर दिया, स्पेशली आफ्टर ब्रिटिश. तो ये जो वहां का जो कॉन्सेप्ट था कि ड्यूरिंग पीरियड्स women should not be allowed in kitchen and all, it was actually the idea was for rest. Correct. इसको फिर कंजर्वेटिव लोगों ने कहा कि women get dirty या वो बाद में myths बने. True. But actual में जो इंडिया में था, it is because you want to give the woman rest because of that pain. So India was actually very progressive, which then somewhere down became very conservative, and now we are heading towards what is called progressive, but we were originally very progressive. Correct. So ये बीच वाला गड़बड़ हो गया. Now they are starting with this thing in office culture also to give leave during your periods, but this was ये पहले से ही था. ये पहले से ही था. But कुछ और चीजों से जोड़ दिया गया. नहीं, अब और ये कहते हैं कि ये वेस्टर्न कल्चर है. ये एक्चुअल में इंडियन कल्चर था. मैं आपको बता रहा हूँ, और ये जेन्युइन है. मैं बहुत सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मेरा एक जो स्टार्टअप का मैं एक पार्ट हूँ, वो डाटो को लेकर है. उसका एक AI मॉडल है. तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, थ्रू दैट आई मेट समबडी जो नीम के टूथब्रश, बैम्बू के टूथब्रश और चारकोल के टूथपेस्ट बेचता है. Okay. और वो $10 के बेचता है. और मैंने से कहा कि क्यों बेचते हो? कह रहे नहीं, प्लास्टिक इज हार्मफुल, नीम इज गुड. तो इंडिया में हम किससे ब्रश करते थे? वही कर रहे, $10 में बेच रहे, हमारी चीज वो हमें बेच रहे. So it's nice, but that's how it is. Yes, I mean this is how it is. We are becoming progressive every day. पर पहले के ही वही आइडियाज है, but और आइडियाज वही है. Yes, when we are talking about you said like you are a fitness freak also. Yeah. So what do? Do you do like yoga or gymming, or how is your daily routine? So I work out. मैं कहीं पर भी हूँ, मैं वर्कआउट करता हूँ. पूना में और दिल्ली में मेरे घर में जिम है. पूना के मेरे घर में स्विमिंग पूल भी है, सो आई एटलीस्ट मैं ये कर लेता हूँ. जिमिंग एवरी डे, 5 दिन हफ्ते में. मुंबई में जब मैं रहता हूँ तो जिम इज राइट नेक्स्ट डोर टू माई हाउस, सो दैट्स नॉट एन इशू. और मैं और कहीं पर भी ट्रैवल करता हूँ तो आई मेक श्योर दैट मैं जहां पर रहता हूँ वहां पर देयर इज एक्सेस टू द जिम. इवन इंडिया से बाहर, आई मीन even outside India, absolute access to the gym is a must. So that is something that I always take care of. 5 days a week I work out. Or please, workout, muscle training, resistance training is extremely important. It is the base of fitness. So I want to maintain muscle mass. So I do it for sure. It's not like you're doing cardio one day or the other day you're doing like upper body or something. No, so I do upper body, lower body. I divide. Again, lower body, very, very important. 60% of your weight is on your legs. Legs is very important. Correct. The more you do legs, the younger you'll be. So very important. So of course I divide it. Legs, chest, bicep, tricep. So of course I divide it. I divide it in pulling, pushing exercises. So chest, shoulder, triceps, back, biceps, and legs. But I do resistance training. That's what I'm trying to say. So that for sure. And the second thing I do is I eat only 1 meal a day. Why so? I mean, I think that's it helps in reverse aging, according to me. So this is the secret. This is the secret. This is the secret for a glowing skin. Secret for glowing skin. You believe me, I do nothing. I just eat 1 meal a day. Morning I have coffee, evening I have coffee, and I have a black coffee otherwise. You have black coffee. So no breakfast or anything, or only 1 meal? Only 1 meal a day. Most of the times it's in the late afternoon, evening. Number 2, I don't have sugar. I've given up sugar completely. Not at all? No sugar and at all. And in food, like, is there something like you don't eat rice or... So now I've given up whites. So no rice, no roti, no maida, no... I've reduced salt. No sugar, that is also white. So I've reduced, I've given up whites. But Sundays I cheat. But no sugar even on Sundays.
Okay, but then how do you cheat then? Roti rice. Okay, like that. Yes. Otherwise, you don't have like 6 days a week, no roti, no rice, no carbs. I eat fibers, I eat vegetables, I eat protein and good fat. So this is the secret, and everyone, I think, should know this. Yeah, this helps in reverse aging. Stay healthy. Yes. This helps in reverse aging, and believe me, in the last 4 years. I haven't even taken a paracetamol. I've only taken 2 paracetamols in the last 4 years, or 3 during my COVID shots, which I had to take with the Covishield. So along with that, I took a paracetamol. So those are the only 3 I've taken. In the last 4 to 5 years, I have not fallen sick even one day. Never. But that's a good thing, right? That's a great thing. Yeah. I mean, otherwise, chalte hi kisi ka sarda, no headaches, nothing. Hey, headache hota hai, but I just live with it. Because you go for these debating things. उसमें बहुत headache, वो अलग headache होता है. मतलब जब डिबेट करने जाते हो, इतने लोगों से बात करते हो, कुछ तो सर दर्द तो होता ही होगा ना. हाँ, वो तो अलग सर दर्द. मुझे तो कई बार लगता है कि न्यूज़ चैनल्स वालों ने एक डिस्प्रिन रख देनी चाहिए. जाते हो कि आपने भैया अभी डिबेट किया है, आप प्लीज डिस्प्रिन लेके जाइए. This happens. But मैं दवाई खाता नहीं हूँ, तो मुझे इसका कोई फायदा नहीं. बट सर दर्द बहुत होता है डिबेट के अंदर कभी-कभी. कुछ लोग होते हैं जो इतने या तो एरोगेंट होते या उनको समझना ही नहीं है क्या कह रहे, तो उसमें कभी-कभी हेडेक होता है. बट अदरवाइज more or less I enjoy debating. Let's talk about the reality shows. You are loved by people on screen, and when you were in Bigg Boss, you were the highest paid contestant. Correct. फिर आप आए लॉकअप में, ये कंगना रनौत का शो, एकता का शो. So Ekta's, I love Ekta to death. She's one of my closest friends. Okay. और if Ekta says something, I never say no. So it was Ekta का शो. हाँ. But वहाँ पर धमाका ही मचा दिया आपने. बिग बॉस में धमाका किया. You revealed something big on this show. हाँ, बिग बॉस में बहुत मजा किया. बिग बॉस में बहुत दोस्ती बनाई. हाँ. खास करते Siddharth Shukla. मैं आपको बताऊं, I have never seen a bigger TV star than Siddharth Shukla. मतलब that guy was phenomenal. वो इतना बड़ा स्टार था, उसको खुद पता नहीं था. मुझे आज भी याद है जब मैं बिग बॉस हाउस में एंटर किया, फर्स्ट पर्सन आई मेट वाज शहनाज, सेकंड आई मेट वाज सिड. और जब सिड वहां खड़ा था, सिड पुट हिज हैंड आउट एंड ही सेड he knows me because his mom watches news channels. Correct. And Sid knew me. Or the first thing I told Sid was, Sid, you don't know how big a star you are. And I was outside, I was watching Bigg Boss before going in, and मैंने Sid को देखा था. Sid was such a big star, a big star. He was phenomenal. I just think very bad that he's no longer amongst us. Had he been there, I think Indian television would not have had a bigger star than him. Correct. He had crossed. He was like a superstar. Correct. And the best thing about Siddharth Shukla is he was phenomenally intelligent and well-read. तो हमेशा एक perception होती है कि ये जो actors है इतना पढ़ते नहीं, इनको current affairs के बारे में इतना ज्ञान नहीं है. मैं आपके साथ एक चीज शेयर करता हूँ. Siddharth Shukla was very well aware of current affairs. हम लोग जो थे इतनी बातें करते थे करंट अफेयर्स की कि बिग बॉस से डंडा मिलता था हम दोनों को. क्योंकि पॉलिटिक्स की और बाकी बातें अलाउड नहीं. और वी डिडंट गिव अ डैम. तो हम तो अपनी बातें करते रहते थे. उनको कंटेंट नहीं मिलता क्योंकि हम अपनी बात करें वो दिखा नहीं सकते उन्हें. बट हम इतनी बातें करते थे, एंड आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड दैट ही वाज सो वेल अवेयर. एंड मैं एक चीज शेयर करता हूँ. जब उसने मुझे बताया कि जब भी वो आरबीआई क्रॉस करता, आरबीआई की बिल्डिंग, उससे सलाम करता, क्योंकि उसके पिताजी आरबीआई में काम करते थे. And he was just a terrific human being who was so well aware and knew so many things. And to me personally, it came as a shock that he's no longer amongst us. Yeah. So when you came to know about this, like, I was in Delhi. I just took a flight and flew back. I was in Delhi. I remember it was morning, and one of the we had a Bigg Boss. We have a Bigg Boss WhatsApp group. Okay. And usme one of the persons told us that he's no longer there. So I tried calling a couple of people, and then by then it broke the story. Okay. That this is what happened in the night, etc. And I just rushed to the airport and I flew back. Of course, then I met auntie, his mom, and his sister. I did lunch with them. But it was a shock to me because Sid and I were in touch during lockdown. Yes. And we would keep chatting during the lockdown. And I couldn't believe that here is a guy who I was so much in touch with and we would have so much fun. Is suddenly gone, and he was so fit and good shock tha. Yes, people love him. People still love him. I'm telling you, you see,
film stars, right? Superstars, Shahrukh ho, Amitabh ho. I really think Siddharth Shukla was the Shahrukh Khan of television. Correct. He was huge. Yeah. And the best part is he didn't know how big he was. He just didn't realize how big he was. No, but did you work out, with him in Bigg Boss? कुछ ऐसा regime बना होगा ना आपका? नहीं, so we didn't work out together, but we used to share the same bed. He and I used to sleep on the same bed. तो हमारी बहुत सारी बातें होती थी. And also because I was pleasantly surprised, he was so well informed on current affairs. तो बहुत मजा आता था उससे बात करने Okay. And what about the other show, Lock Up? I The made big very good reveal thing you did. Were you not scared what will happen like when you come out of the show? एक फैज की पोएम है. एक्चुअली फैज की पोएम नहीं है. वो पोएम है, ऐसा कहते हैं, फैज कहते हैं. तो उसकी लाइनें हैं, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें बताएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें बताएंगे, जो है वो भी खो सकता है. इस राह में रैजन है इतने. रैजन यानी कि चोर. कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें बताएंगे, जो है वो भी खो सकता है. इस राह में रैजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है. अरे कुछ और तो अक्सर होता है, कुछ और तो अक्सर होता है, लेकिन तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है. ये वक्त फिर लौट कर ना आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा. देखा जाएगा. Okay, that was beautiful. Yeah. How do you remember these lines? This is the question I have. Like, how do you all remember these lines? I mean, I don't remember. और मतलब और किसने बोला मुझे बताओ. Who else is as intelligent? बताओ मुझे जानना है. Who all? कल कपिल मिश्रा जी से बात हुआ. Kapil is phenomenal. Yeah. So the way he was, reciting this poem, एक दुष्यंत वाला poem, my God, phenomenal. And you again here, how do you do it? How do you learn it? Do you read books? I read books. Yeah? मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है. I love reading books. Okay. But, as we are talking, and I have seen you so many times on television and everywhere, your confidence is your best accessory, let me tell you. Correct? So, also, your sense of style. So, do you have any tips for the audience, to lift their style sense or something? अरे मैं सस्ता और टिकाऊ हूँ. मेरा कोई स्टाइल टिप नहीं है. मैं एक ही शैम्पू इस्तेमाल करता हूँ, उसी से मैं अपना फेस वॉश करता हूँ. मैं बिल्कुल सस्ता और टिकाऊ हूँ. नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल. वही चलता है. मैं I do nothing. I really do nothing. And आप देखिए, this is how it's nothing. But for clothes, genuinely, as I said earlier, my stylist and my wife, I have no idea of fashion. But एक चीज मैं आपको एक funny चीज बोलता हूँ. जब मैं when I was younger, तो जब भी मैं शेव या कुछ करने जाता, हेयर कट करने, तो जो सैलून चलाते वो कहते आपको फेशियल करना चाहिए. तो मैं कहता क्यों? तो कह रहे नहीं, जब आप बड़े हो जाओगे तो आपका स्किन खराब हो जाएगा, जब आपकी उम्र बढ़ जाएगी. मैं फेशियल कराता नहीं था, बट मुझे हमेशा ही डर लगता था. मैं कह रहा नहीं, केमिकल्स नहीं लगा होगा. तो ये नहीं, सिर्फ पानी से आपका फेस कैसा चलेगा. और मैं आई डोंट वॉश माय फेस. अब वही लोग, जब मैं जाता हूँ हेयर कट के लिए, तो कहते सर आप फेशियल कीजिए. मतलब कौन सा फेशियल? हाइड्रो फेशियल. मतलब ये क्या है? इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं, इसमें पानी है. तो मैं कहा इतने साल से मैं क्या कर रहा था इसका. तो ये देखिए, it's just natural. But still you do not use any soap or anything? No, Johnson's baby shampoo. Okay. Will Johnson's pay me for this? They should pay me for promoting their brand. Promoting them, yes. Please pay me for this. So baby shampoo. और उसी से I wash my face. And that's good. I don't do anything. Okay. We should try this. सभी ने try. मैं स्ट्रेस लेता नहीं हूँ, मैं स्ट्रेस देता हूँ. So that is one good part. इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं. हंसते रहो, हंसते रहो, हंसते रहो, दूसरों को रुलाते रहो, खुश रहो, दूसरों को दुखी देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं. Okay. So, you always wanted to be in politics? I don't know if I always wanted to be in politics, but I did visualize politics. But I used to run nightclubs. And one day I just got bored of running nightclubs. I used to run nightclubs, restaurants. और मैंने सोचा एक दिन कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब how long do you politics में जाते हैं? नहीं, बस कुछ और करना है, कुछ देश के लिए करना है. Genuinely I thought that. और उस वक्त मैं जब पुणे में था, तो मैं दिल्ली आता था because I had a lounge and a restaurant in Delhi also. और पूना में हो रहा था कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स, जो दिल्ली में 2010 में होने वाला था. So I was involved with that. Then I came to Delhi. People started meeting me, and I had a flair for political things. And I wanted to do something for the country. So it was just a transition that happened. And one day I just got bored of running nightclubs. I said I don't want to do this anymore. But I was very successful in running nightclubs.
Delhi. Are you still Pune. running nightclubs? No, not anymore. Not anymore. I'm involved with as a mentor, a lot of restaurants, lounges. I'll always give them advice, but I don't run anymore because, like I said, I was done with that phase. But when I was in that phase, I had so much fun. It was a lot of fun. So, see, we see you in many news channels, like debating, all of us know, and you are a very good debater when it comes to talking skills and all. But are debating skills more than enough or sufficient to be a political leader? I understand when it comes to, having a conversation, keeping your point of view, having a good conversation with other people, right? But to be a good political leader, are these skills sufficient? Are you a good political leader? I don't know if I'm a good political leader. मैं politician बिल्कुल नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत मुंह पर सब चीज कह देता हूँ तो बिल्कुल political quality नहीं है मुझ में. I am a good human being, I feel. And I think to be a good leader, one must be a good human being. Okay. That's the quality of being I think a good politician or a good political leader or a good leader in general. If you can be empathetic towards people, if you can think about people, why do we say that Maryadam Purushottam Sri Ram, or why do we say that Ram was the best king? Even if you leave the divinity out of it, you just look at Ram as a king. Why is it Ram Rajya? Why not Ravan Rajya? Ravan had a very successful kingdom. Correct. ये सोने की लंका थी, but बढ़िया successful आदमी था. Yeah. But it's never Ravan Rajya, it's Ram Rajya. Ram Rajya. Because Ram had empathy. Because Ram could think about others. Because Ram cared about others. Correct. So, for me, I think leadership is defined in what you see in our mythology, what you see in Ram. What is the difference between Ram and Duryodhan? Ram could care, Ram could give away. Duryodhan wanted everything for himself. True. मतलब कृष्णा जाते कहते 5 गांव दे दो इनको, और 5 गांव भी नहीं दे सका, बोले 1 इंच जमीन नहीं दूंगा. अरे 5 गांव मांग रहे थे, वो कह सब रखो आप. कृष्णा जाते और कहते दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से रहेंगे, परिजन पर अस्सी ना उठाएंगे. दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साध्य चला. जब नाश मनुष्य पर जाता है, पहले विवेक मर जाता है, उसका विवेक मर चुका था. और राम देखो, उसको कहते कि जब दशरथ कहते मेक लीव द किंगडम, if you want break the promise, he says no, you've promised, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए. Leaves the kingdom and goes. That's the difference. Duryodhan was also a king, or a king to be, and Ram gave it up. Both Duryodhan and Ram were kings to be. You need to have these qualities. You must have the ability to give up. You should not be attached, and the ability to think about everybody else. Ram doesn't tell his father, promise आपने किया था, मैं क्यों निभाऊं? Yeah. He gives it up. He was also king to be. Duryodhan was also in contention to be. And Duryodhan can't give 5 villages. That's the difference. That's true, yeah. और ये भारत की संस्कृति है. ये I genuinely feel ये कोई धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है. धर्म of course है. Correct. But ये इंडिया की कल्चर है. जैसे आप मुंबई से आते हो, मैं पुणे से आता हूँ. अगर वहां पर जो गणेश चतुर्थी होती है, it's not about religion, it's about culture. हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, सिख. जैसे हम वहां पर उसको गणेश मंडल कहते हैं, जो पंडौल होता है उसको मंडल कहते हैं. मंडल में मुसलमान भी बैठते, वहां पर सिख भी बैठते, क्रिश्चियंस भी बैठते. इट्स नॉट अबाउट. तो ये जो चीज है, ये हमें कल्टिवेट करना है. ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डिवाइड हो गया है. मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा. When Monica and I were dating, so she came to Pune, she wanted to meet my friends, see generally how I'm doing. कि सच में बंदा ठीक है यार, फेंक रहा है. अच्छा, like that? I'm just joking. No, but she came, she wanted to meet my friends and get to know my friends, my people, etc. So when she came, Ganesh Chaturthi was on in Pune. So we were going for a drive and she said, listen, I want to do darshan, so take me, because Dagru Shet is very famous. But Dagru Shet we were going that evening. So I told my secretary that arrange Dagru Shet and all, so we can go. But in the meanwhile, I said, if you want to do right now, I'll take you to one of the mandals here. So I stay in Pune on something called Boat Club Road, to वहाँ पर एक मंडल. So cut to, I said कि हम घर के पास है, तो let's go to यहाँ पर मैं आपको दर्शन कराता हूँ, शाम को दगड़ू शेठ और बाबू घेनू जाना है, सो यहाँ पर हम कर लेते हैं. ठीक है. सो हम जाते हैं,
we go for the darshan, and she does darshan, and the aarti is in Marathi. So my friend taught her the aarti in Marathi. She knew it in Hindi, but she knew it in Hindi, तो मराठी में उनको सिखाया वगैरह. उसके बाद मैंने उनको इंट्रोड्यूस कराया उस मंडल में. मैंने कहा ये मेरा फ्रेंड अली है, ये हुसैन है. And then she's like, and I didn't realize it because हम पुणे मुंबई में इस चीज को realize नहीं करते. Yes. And then बहुत difference है. बहुत difference. And she's like, but these are Muslims. I was like, yeah. And then I'm like, yeah, but they run the mandal. And then she's like, oh, because we don't look at it as a religious thing. Yes. It's cultural. Yes. So here was my childhood friend Ali Hussain teaching her the Aarti in Marathi, running the Ganpati mandal. Absolutely. And for some people, it's very surprising to see that. Now, if you come to, and most people in Pune or Mumbai, correct, in the northeast corner, you'll have Ganpati. You'll have Ganpati, please. So in my house, the entrance, there's Ganpati. It's how it is. It's got less to do with religion, more to do with culture. Yes. When you're talking about this thing, right, the Muslims in the pandals and all, बहुत बार ऐसे होता है और ये मुंबई पुणे में देखा ही नहीं जाता. It's so common. What happens the entire day, there is a lot of janta coming for darshan and all, and we see like I did my studies in Pune and I live in Bombay. So what happens generally is रात को ना सभी लोग कोई एक बड़ा से इसमें कोई राजमा चावल बना रहा है for the entire पंडाल और सब मिलकर खा रहे हैं, सब मिलकर खा रहे हैं, और लेडीज वहां बैठ रही है, वो बातें चल रही है, सारी कॉलोनी है. Yes. ये nobody goes home. Nobody goes home. सारी रात बैठे, बातचीत हो रही है, different competitions are going on. Yes, singing, और यही कह रहा हूँ, it is so cultural. It has less to do with religion. अच्छा, इसमें एक interesting fact है. पता है चालू क्यों हुआ था? ये तिलक जी ने चालू किया था to fight the British. तो because उनके अखबार को उन्होंने बैन किया था, केसरी को, और उन पे सेडिशन का चार्ज लगा था. तो अब वो मैसेज कैसे करे अंग्रेजों के खिलाफ? हाउ डू यू स्टार्ट? तो ये एक गैदरिंग हो गया था, so that you could talk, you could freely mingle. Yeah. That's why I'm saying that people sometimes don't even realize how successful in this. Yeah, sorry. आज तक चल रहा है वो culture. आप खुद कह रहे हैं, people sit, entertain, there is singing, dancing, celebration. Correct. And again, a lot of times people sort of get a little surprised when I say that, for example, us in Pune or Mumbai. Yeah. We take Ganpati as a member of our family. He's a friend. Yes. हम उनसे लड़ते भी हैं, हम उनसे प्यार भी करते हैं, हम उनसे दोस्ती करते हैं, हम उनके सामने डांस करते हैं, हम उनके सामने कंपटीशन करते हैं. ये इनको समझ में नहीं आता है. वो सिर्फ एक रिलीजियस प्रिज्म से देखते हैं. वो हमारे घर का हिस्सा है. So I don't, there is no difference. उनके सामने कोई difference है. You could be a man, woman, third gender. You could be Hindu, Muslim, Sikh. Correct. You are there. You could be Nastik. ये कितनी अच्छी tradition या प्रथा चली आई है, right? Now we go for these networking events and all, but अगर आप ये देखते हैं, ये networking event ही है देखा जाए तो, because हम जहाँ रहते हैं, I know like I don't even know how many people there are in building or who is doing what. But जब ऐसे occasions आते हैं, right? आप जाते हो. Either your daughter is performing. There are so many events, na? Multicultural events happening. Like आज singing है तो कल drawing है. So children are participating. And the best part is you are meeting different people. अच्छा आप ये करते हो. कोई कह रहा है मैं फिल्में बनाता हूँ. कोई कह रहा है मेरा tech वाला कोई काम है. And this is how you're networking. This is the best part. Exactly. यही तो networking है. और आज लोग उसको networking का वो शब्द देते हैं. This is actual networking. Correct. जी पहले से चला है. पहले से चला रहा है. No caste barrier, no religious barrier, no gender barrier. What better than this? And mingle freely. Yes. और साथ में बैठकर खाना खाओ. Yes, that happens like every night. The people who are contributing in this, जो लड़के हैं, जो ये सारा पंडाल का काम करते हैं, as you said, no Hindu, no Muslim, everyone is sitting at night eating together. और आपने एक चीज नोटिस किया, उनका जो खाना होता है एक्चुअली टेस्टी होता है. बहुत. आप कुछ जो भी प्रसाद होता है ना, बहुत टेस्टी है. दाल चावल भी हो ना तो टेस्टी होता है. Yes. लंगर जाओ आप. लंगर का खाना है like awesome. Amazing. Amazing. और चाहे वो सब्जी और रोटी हो, but it's amazing. Yeah. लंगर में ना, I like this culture where you cannot take the roti like that. Like they are not going to. You have to keep your hand like this. जब आप अपना हाथ ऐसे रखते हो तो वो आपको रोटी देते हैं. और देखिए अब ये सारे जो वेस्टर्न मोटिवेशनल स्पीकर्स है, और मैंने भी आपको शुरुआत में कहा आई प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड. यही तो ग्रेटिट्यूड है. ये सारे इंडियन कॉन्सेप्ट्स है जो इन्होंने लेकर अब इसको ये लोग मार्केट करते हैं, बट दिस इज ग्रेटिट्यूड. आप मुझे बताओ, एक्चुअली जब हमें खाना मिलता है, चाहे आप इंडिया में कहीं से भी हो, हमने पहले
हमारी आयुर्वेदा में हमने पढ़ा है अगर इसमें यू थैंक द फूड, हम गॉड को थैंक करते हैं, फूड को थैंक करते हैं, जो भी कि हम खा रहे, अब इसी को ग्रेटिट्यूड कहते हैं। आप रोटी ऐसा लंगर में ले रहे हो, दिस इज ग्रेटिट्यूड ना, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू मुझे ये मिल रहा है। yes. और अब इसको आप कहते हैं प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, which I do, but that's how it is. So all this is Indian concept, which now they have sort of taken over, and they market it very well. Very well they have marketed. Yeah. Tehseen, tell me, I can see a tattoo here. What is this all about? I mean, it's a lovely tattoo. ये जब भी भाजपा वाले मुझे कहते हैं ना तुम देशद्रोही हो, पाकिस्तान चले जाओ, मैं बोलता टॉक टू द हैंड, टॉक टू द हैंड, एंड हैंड देखो कांग्रेस, मैं आपको प्रमोट कर रहा हूँ, एंड बट जोक्स अपार्ट, नहीं ये इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं बिग बॉस में जा रहा था, एंड यू नो आई ऑलवेज वेयर द फ्लैग पिन। फ्लैग पिन की भी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको बोलूंगा, मैं हमेशा फ्लैग पिन पहनता हूँ। तो बिग बॉस वालों ने मुझे कहा, एंडेमॉल वालों ने या वाईकॉम वालों ने, आई डोंट रिमेम्बर, कि आप ये शो पे नहीं पहन सकते। अच्छा। अब मैंने कहा कि यार भारत में हम शो में भारत का झंडा नहीं पहनेगी। अच्छा, ये फ्लैग पिन मैंने सब जगह पहनी है, व्हेन आई गो अब्रॉड आल्सो मैं पहनता हूँ, मैं से कभी उतारता नहीं हूँ, एक्सेप्ट व्हेन आई एम जिमिंग या स्लीपिंग, ठीक है, गिर सकता है, वरना मैं हमेशा ऐसे पहनता हूँ। मतलब बस दिस इज, ये मेरी आइडेंटिटी है, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। उन्हें ये डर था कि बिग बॉस में अगर कोई लड़ाई हो गई, कुछ अभद्र चीज हो गई, कुछ ये हो गया, तो उसमें कंट्रोवर्सी हो जाएगी, सो दे वर बीइंग सेफ। राइट। अब मैं क्या करूं, तहसीन को तो झंडा चाहिए, तो फिर मैंने टैटू करवा दिया, ट्राई कलर। इसलिए मैंने करवाया क्योंकि मैं हमेशा टैटू करवाना चाहता था, आई वांटेड माय फर्स्ट टैटू टू बी समथिंग परमानेंट, जो मेरी आइडेंटिटी जिंदगी भर रहेगी। तो फिर मैंने तो मैंने ये करवाया, और जय हिंद जय भारत मैंने लॉकअप के पहले कराया। तो पहले ये था और फिर ये हुआ, तो मैंने दोनों रियलिटी शोज के पहले टैटू करवाया। पावरफुल मैसेज एक्चुअली। या आई लव इट because the tricolor means a lot to me. It means everything to me. This is my only identity. मैं ना हिंदू हूँ, ना मुसलमान हूँ, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं, ना मैं महाराष्ट्र हूँ, ना मेरी आइडेंटिटी सिर्फ तिरंगा है। दिस इज माई ओनली आइडेंटिटी। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि आइडेंटिटी में दुनिया में कहीं पर भी रहूं, ये आइडेंटिटी मेरे साथ रहे। सो आई ऑलवेज से दैट द ट्राई कलर्स इन माय ब्लड। यस, बट यू नो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द ट्राई कलर एंड एवरीथिंग, इंडिया में हिंदू मुस्लिम एक एजेंडा बना के people are fighting, politicians are fighting. What do you have to say about this? Even the film, धर्म के नाम पे जब हम बोलते हैं अपने, you know, what about the films also? एक recent movie आई है अभी, आदिपुरुष. Did you see it? मैं फिल्म्स देखता नहीं? इस फिल्म को तो मैं बिल्कुल नहीं देखने वाला हूँ। क्या देखिए, मैं आई एम फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच। मैं मानता हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हमेशा एक्सेस होनी चाहिए, ना कि कम। राइट। अगर गलती हो तो ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच की तरफ गलती हो, ना कि कम। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके लिए बराबर हो। ये ना हो कि आप एक ही धर्म पे फ्रीडम ऑफ स्पीच अलाउड हो, दूसरों पर नहीं। आपको क्रिटिसाइज करने का पूरा अधिकार है, आपको फिल्म बनाने का पूरा अधिकार है, आपको चित्र बनाने का पूरा अधिकार है, लेकिन वो एक ही धर्म, एक ही भाग, एक ही कल्चर के लिए वो गलत है। फिर सबके लिए होना चाहिए या किसी के लिए ना हो। ये सवाल अब भारत को डिसाइड करना है, और मैं इस पक्ष में हूं कि सबके लिए हो। यू कैन नॉट क्राई विक्टिम के मेरे लिए क्यों बनाए, फिर सबके लिए बनाना चाहिए। तो दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया। अल्टीमेटली इंडिया डज नॉट हैव ब्लास्फेमी लॉज, लेकिन एट द सेम टाइम आपने आदिपुरुष की बात की, दे हैव लाइक मेड अ मॉडर्न रामायण, एंड कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और क्या डायलॉग्स है। अब आप देखिए, हनुमान जी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर, वो इस तरह की बात करेंगे, तेल तेरे बाप का। मतलब कुछ तो आप उस कैरेक्टर के बारे में लिख रहे हो। हनुमान जी, आप ये भी छोड़ दीजिए किसी के भगवान है, मैं उसमें भी नहीं जा रहा हूं। वो कैरेक्टर इज लार्जर देन लाइफ। हनुमान ज्ञान गुण सागर, तेल तेरे बाप का, ये एक डायलॉग है। करेक्ट। तो आई थिंक उस मर्यादा को नहीं क्रॉस करना चाहिए। शुड देयर बी सेंसरशिप? नो। पब्लिक विल बॉयकॉट इट, जो उन्होंने किया। शुड देयर बी वायलेंस? नो, एब्सोल्युटली नॉट। आपको फिल्म अच्छी नहीं आई, बॉयकॉट इट, वॉक आउट ऑफ द मूवी। किताब पसंद नहीं, किताब बंद कीजिए। ये पॉडकास्ट पसंद नहीं, मत देखिए। बट आपको अधिकार नहीं है कि आप थ्रेटन कीजिए कि ये पॉडकास्ट। वायलेंस इज नॉट राइट। एट द सेम टाइम फ्रीडम ऑफ स्पीच शुड बी एप्लीकेबल टू एनीवन एंड एवरीवन। ये सिलेक्टिव नहीं हो सकता फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो नुपुर के साथ हुआ, आप जानती हो नुपुर शर्मा, इज रॉन्ग। आप कह रहे हो उस लड़की ने जो कहा नहीं कहा, लॉ विल टेक केयर। आप कह रहे हो आप उसका सर तन से जुदा कर दो, आप होते कौन है? वो लड़की डरी हुई है। एंड आई एम पिस्ड ऑफ विद द इंडियन गवर्नमेंट कि अफगानिस्तान भारत को लेक्चर दे रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पर, और हम उसको माफी मांग रहे हैं। हु द हेल इज अफगानिस्तान? मतलब
शर्म आनी चाहिए सरकार को कि आपने एक लड़की की जिंदगी खतरे में डाल दी। बहुत थ्रेट्स, बहुत हाउ कैन यू डू दिस? व्हाट इज रॉन्ग? कल मैं टीवी चैनल पे था यूसीसी पर। एक तो ये यूसीसी भी मोदी जी ने लाए पोलराइज करने को, ठीक है, वो मेरा पॉलिटिकल ओपिनियन है। यूसीसी का ना कोई ड्राफ्ट आया है ना कुछ। एक मौलाना साहब आए थे उस डिबेट पे, अच्छी बात है मौलाना साहब आए। ना यूसीसी का ड्राफ्ट आया कुछ नहीं, हम शरिया को फॉलो करेंगे। तो मैंने मौलाना साहब से बड़े अदब से पूछा, मौलाना साहब आप शरिया फॉलो करेंगे, अच्छी बात है, शरिया में लिखा है वीडियोग्राफी भी बंद है, तो टीवी पे क्यों बैठे हुए? मौलाना साहब मुझसे नाराज हो गए। तो ये जो हिपोक्रेसी है ये बंद होनी चाहिए। हिपोक्रेसी। और एट द सेम टाइम जो दूसरे एंड पे मैं से कहता हूँ हॉर्सशू थ्योरी। हॉर्सशू जैसे होता है राइट एक्सट्रीम और लेफ्ट एक्सट्रीम। मैं कहता हूँ राउडी राइट और लूनी लेफ्ट, ये दोनों को लगता है बहुत दूर है, बट दे आर एक्चुअली वेरी क्लोज टू ईच अदर। दिस इज द हॉर्सशू थ्योरी। ये जितने भी एक्सट्रीमिस्ट है, चाहे वो इस समाज से हो या उस समाज से, इनको लगता है ये एक्सट्रीम है, बट एक्चुअली दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। द हॉर्सशू थ्योरी बिल्कुल अपने आप। वायलेंस करना है, बॉयकॉट करना है, थ्रेटन करना है, दूसरों को बातें सुनाना है, ये गलत है। और मैं फ्रैंकली मानता हूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। Markets will take care whether it works or no. We should always have more freedom of speech, but you don't have the right to threaten somebody, and it should be equal for everyone. And tell me something like when you are going to all these reality show, अगर मान लो कौन सा वाले ओटीटी न्यूज चैनल वाले या न्यूज चैनल वाले, कौन सा रियलिटी? दोनों में कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग होते हैं। करेक्ट। बट अगर आप कोई पॉलिटिकल रियलिटी शो बना रहे हो अपना ही, है ना, तो उसमें हु विल बी द कॉन्टेस्टेंट्स एंड व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस यू विल गिव देम? अभी कितने सारे रियलिटी शोज चल रहे हैं, बिग बॉस भी अभी चल रहा है वगैरह, बट अगर आपका कोई एक पॉलिटिकल बेस्ड रियलिटी शो बना तो वो कौन सा होगा? व्हाट विल बी द चैलेंजेस एंड द बेस्ट पार्ट, व्हाट विल बी द ग्रैंड प्राइज? बट दिस इज अमेजिंग ना, कि ये आइडिया मस्त है ना कि हम एक रियलिटी शो बना दे। मस्त है, ये एकदम मुंबई की लैंग्वेज हो गई यहाँ पर, हमने मुंबई की लैंग्वेज कर दी। सी आप हमारे से, हम भले हम दिल्ली में बैठे हुए, आप हमारे अंदर से मुंबई कर नहीं निकाल सकते। एकदम मस्त, एकदम जकास आइडिया। सो ओके, यस, आइडिया इज गुड। रियलिटी शो, अगर बिग बॉस टाइप पॉलिटिकल रियलिटी शो बनाए तो बिग बॉस हो गए मोदी जी। अच्छा, बढ़िया, बिग बॉस मोदी जी को बना देते हैं। मोदी जी चाहते हैं कि राहुल जी आप यहाँ आइए। मोदी जी चाहते हैं अमित शाह आप जाकर उनको नहीं, अमित शाह आप जाकर उनको कमरे में बंद कर दीजिए। ओके। तो मोदी जी विल बी बिग बॉस। चैलेंजेस, राहुल जी को हम पुशअप, फिटनेस एकदम बढ़िया है राहुल जी का, तो उनको पुशअप करा देंगे। अच्छा। राघव जी को हम रखेंगे उसके अंदर, राघव जी क्या करेंगे? राघव जी रोमांस कर सकते, बढ़िया दिखते, तो राघव जी को हम रोमांस में रख देंगे। फिर निर्मला सीतारमन मैम को हम रख सकते हैं सब कुकिंग के ऊपर, क्योंकि उनको कुकिंग की उनकी, और she'll be the in charge of cooking and all that. तो निर्मला सीतारमन मैम, क्योंकि also because finance है तो सारा बजट बढ़िया चला देगी वो। तो उसके लिए प्लीज इसको आप मिसअंडरस्टैंड मत करना कि वुमेन है इसलिए कुकिंग, प्लीज देयर इज नथिंग, हम इसको क्लैरिफाई कर दें वरना हमें बॉयकॉट करेंगे। नहीं, हम क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर है तो हम उनको कुकिंग में सारा बजट घर का चलाने के लिए उनकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि बिग बॉस में टास्क होता है ना, हम उस हिसाब से कह रहे हैं। फिर हो गए उस, और कौन होगा उस रियलिटी शो के अंदर? हम एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए हम किसको डालें जो बहुत हंसाता है? लालू जी, बढ़िया एंटरटेनमेंट, लालू जी का एंटरटेनमेंट बढ़िया होगा। और थोड़ा आपको और एंटरटेनमेंट चाहिए तो रेणुका चौधरी को डाल दीजिए। ओके, व्हाट विल बी द ग्रैंड प्राइज, यू टेल मी? जो जीता प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि मोदी जी तो मोदी जी रिटायर हो गए ना 29 में, तो हो जाएंगे ना रिटायर, अगर वापस दोबारा जीत गए तो फिर 29 में तो रिटायर होना है उनको। एंड देन तो जो भी है, जो जीता वो प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो अलग अलग टास्क हो गए। अरविंद केजरीवाल जी हो गए एकदम मास्टरमाइंड बिग बॉस के, मास्टरमाइंड ऑफ द बिल्कुल हाँ, वो सारे षड्यंत्र बनाएंगे और राहुल जी को स्टेइंग लो एंड रनिंग द शो, इसको ऐसा, फिर उनको बुलाएंगे ऐसा। तो अरविंद केजरीवाल जी एकदम षड्यंत्र करेंगे। मैं बोल रहा हूँ हम बहुत बॉयकॉट होने वाले, ये पॉडकास्ट पूरी तरह से सारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्टर्स है सब देखने वाले में, सारे इसको ट्वीट करते हैं हमें बॉयकॉट करने वाले। मैं बता रहा हूँ हम कर क्या रहे हैं। ओह माय गॉड, बट ये बहुत ही हिट शो हो जाएगा अगर ये चलेगा। आई थिंक बनना चाहिए पॉलिटिकल शो हिट हो, हम हिट ना हो जाए, पता चला हम ही हिट हो रहे, वहां पर सारे लोग हमें
वो कर क्या रहा फर्क पड़ता है? है, फर्क कुछ नहीं Yes. पड़ता, बट Yeah. ये मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। I ऐसे mean, रियलिटी शो people में। look up to them, these figure, I mean, Yeah. political figures. अभी आप पॉलिटिकली करेक्ट मत रहो। हाँ। Now you are being all politically correct. आपको लग रहा है बॉयकॉट होगा। Now नहीं, now you are being politically correct. Yes. And tell me something, when politicians go for their campaigns, अब चुनाव आ रहे हैं या जो भी आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ होता है कि ये लकी चार्म है, जैसे क्रिकेटर्स के भी, हाँ, जैसे सचिन तेंदुलकर एक पैड पहले हमेशा। हाँ, करेक्ट। तो ऐसा कुछ होता है पॉलिटिशियंस में कोई लकी चार्म है या जाने से पहले? वी हैव आल्सो सीन दैट पॉलिटिशियंस दे डू दीज बेबीज को किस करना, द फोटो ऑप्स एंड ऑल, तो होता है ऐसा कुछ? हमारे कोई बेचारे बेबी को पूछता ही नहीं। मैं तो कोई पॉलिटिशियन को अलाउ नहीं करूंगा मेरी बेबी को किस करना। वो कहाँ का कितने लोगों से मिलकर आया, उस जर्म्स आ जाएंगे। नो, बट जोक्स अपार्ट, ऑफ कोर्स पॉलिटिशियंस बहुत सुपरस्टिशियस होते हैं, और कुछ भी जो चीज उन्हें गारंटी हो विक्ट्री की वो करेंगे, कुछ भी हो जाए। If it guarantees, so I'm sure they're superstitious. Yes. But what, do you also believe in the lucky charm and the rituals? कुछ ऐसे आपका भी कोई सीन है when you're going out for campaigns, इसके पहले आप कुछ करते हो या कहीं मत्था टेकने जाते हो, something like that? So मेरा एक है, मैं वैसे तो मैं एथिस्ट हूँ, नास्तिक हूँ, बट मैं जब कुछ इम्पोर्टेंट करने की कोशिश करता हूँ तो मैं अजमेर शरीफ जाता हूँ और पुष्कर। और पुष्कर में मेरा एक बहुत फिनोमिनल एक्सपीरियंस है, मैं बताऊंगा। तो वहां पर ऑफकोर्स ब्रह्मा जी का टेम्पल है, अजमेर शरीफ, और तीसरा हर साल मैं एडवांस श्राइन जाता हूँ, बैंकॉक। आप जानकर ये हैरान होगे कि बुद्धिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ ब्रह्मा, दैट इज द एडवांस श्राइन इन बैंकॉक। तो मैं हर साल वहां जाता हूँ, अभी लॉकडाउन में नहीं किया, और इट इज इन द मिडल ऑफ द रोड इन बैंकॉक, द एडवांस श्राइन। और ऐसा माना जाता है कि बैंकॉक पे बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स आते थे, फ्लड्स वगैरह, बहुत सारी दिक्कतें थी, अर्थक्वेक्स। और जब से ये श्राइन बना है, एडवांस श्राइन, तब से बैंकॉक हैज प्रोग्रेस्ड अ लॉट। और इंटरेस्टिंग चीज है कि एडवांस श्राइन के बाजू में कुछ दूरी पर एक इंद्र भगवान और कुबेर का मंदिर है। और ठीक वही पुष्कर में भी ऑफ कोर्स इंद्र भगवान और कुबेर है वहां पुष्कर के मंदिर में। मैं आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। तो मैं अजमेर गया था, अजमेर शरीफ, और सुबह गया, शाम को गया, मैंने अपना जो वहां पर है माथा टेका, और मुझे अगले दिन वापस सुबह में गया अजमेर शरीफ, तो मुझे एक फीलिंग आई कि मुझे पुष्कर जाना चाहिए, एक जनरल फीलिंग आई। तो मैं अजमेर शरीफ गया था अराउंड 11, साढ़े 11 बजे, और एक फीलिंग है कि पुष्कर जाना चाहिए। तो मैं 4 बजे उठता हूँ, जैसे मैंने बताया, मेडिटेट करने के लिए, और इसे शुभ घड़ी माना जाता है, ब्रह्म मुहूर्त। तो उस दिन 4 बजे मुझे फीलिंग आई, मैंने उसे सीरियसली नहीं लिया, और फिर 11, साढ़े 11 बजे अजमेर शरीफ में मुझे फीलिंग आई, तो मैं लगा चलो पुष्कर जाते। तो जिनके साथ मैं अजमेर में रुका था, मैं कहते मैंने कहा उनका, हम जाते पुष्कर। तो उन्होंने कहा कि हम जा सकते हैं, लेकिन 1 घंटा लगेगा, और तब तक मंदिर बंद हो जाएगा। ये जो पुष्कर में जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, 1 बजे ब्रह्मा जी विश्राम करते हैं, 4 बजे उनका स्नान होता है मुहूर्त में, और 5 बजे उठ, तो ये 1 बजे बंद होता है। बोले हम पता नहीं पहुंचेगी नहीं। मैंने कहा नहीं, मुझे फीलिंग आया हम जाते। आप यकीन नहीं मानोगे, हम 12:50 को वहां पर पहुंचे, और वहां पहुंचने के बाद हमने किसी को नहीं बताया था, बस दर्शन करे थे। जो वहां पर पुजारी थे, उन्होंने मुझे टीवी पे देखा था, वो मेरे फैन थे, और उन्होंने मुझे जो दर्शन कराया, और ऑफ कोर्स 1 बजे बंद हुआ, बिकॉज ब्रह्मा जी के विश्राम का समय होता है। एंड जो पुजारी जी थे, उन्होंने हमें उनके घर में ले गए, जो बिल्कुल ब्रह्मा जी के सामने था उनका जो क्वार्टर्स, जो क्वार्टर्स उसी मंदिर के अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर, और वहां हम बैठे, वहां पे हमने चाय पी। सो आई गॉट सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस विद इन पुष्कर। और फिर जाते जाते मैंने कुबेर जी से कह दिया, थोड़ा सा अगर हेल्प हो जाए तो अच्छी बात है, कुबेर महाराज की थोड़ा थोड़ा सा हम पर कृपा कीजिए, थोड़ा सा। So do you see a miracle happening like later when you come from these holy places? Miracles तो होते ही लेते हैं, life itself is a miracle. I really believe it. मैं ज्यादा spiritual नहीं हो रहा हूँ, but ये सारी, दोबारा से मैं कह रहा हूँ, ये सारी चीजें manifest whatever, it's all great. लेकिन अगर आप वापस पढ़ते हो, तो गीता में क्या कहते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को, जो आप चाहोगे वही होगा ना, तो अपना कर्म किया जाए। तो ये सारी चीजें तो लिखी हुई है। इट इज व्हाट यू वांट, व्हाट यू इमेजिन शैल हैपन, इट विल हैपन, बट you have to manifest is a new word that's now come in. Correct. But you have to imagine it. What you want shall happen. You have to live it. So
On a lighter note, you just don't mind. But when you said about Bangkok also, but the first thing comes in my मसाज mind. मैं जानता तुम्हारी मानसिकता ये है मसाज. No. अच्छा एक ना मेरे से प्रॉब्लम नहीं, इट्स नॉट इन रॉन्ग, बट एक है कि जब भी मैं स्पा में जाता हूँ या जब भी मैं थेरेपी लेता हूँ, आई प्रेफर अ मेल मसूस. इसलिए not for any other reason, that generally I like a deep tissue जो थोड़ा सा it's stronger, right, for the muscles. So it's sometimes very awkward जब आप जाते कहते can I have a male masseuse? And they look at you like okay, but that's fine. I mean, but yeah, so but I know मैं जानता आप बैंकॉक के बारे में यही सोचोगे. No, because it's the first time I heard someone Bangkok meditation के लिए जाना, not for massage. Yes, because people go for all the pleasures, right? I mean, so yeah. No, I go for pleasure, but I do the meditation. I always visit the environment. What is your guilty pleasure? My guilty pleasure in Thailand or otherwise? Whatever you would like to say. I mean, all yours. My guilty pleasure is I like chilling by myself, spending time alone. Okay. Number one, and I like. It's very diverse. So I could just be sitting alone and listening to music or reading, or I could be in a nightclub or a lounge. And do you binge watch also? No. I don't binge watch. I don't watch anything on TV. क्या बात कर रहे हो आप? रियलिटी शोज में जा रहे हो? मैंने एक दो देखे. कौन सा देखा आपने? आपका देखा कोई? मैंने महारानी देखा हुमा की वजह से, because Huma and Huma was phenomenal in it. Amazing. She's amazing, and I love Huma. Yeah. And she's. I'm waiting for the part 2. I mean the second season. Part 2 आ गया ना? अब part 3 आना है ना? I mean, yes, part 3. Sorry. Yeah. So I've seen Maharani full, but I saw it only because of Huma. मैंने राजकुमार राव का वो देखा, because again Rajkumar, I love him. The one in which he is the gay police officer. Yes. I saw that movie. Got it. Yeah, वो वाला मैंने देखा. और मैंने हंसल मेहता वाला ये देखा. Recently. करिश्मा तन्ना वाला. But again, that because genuinely it was good. Yes. And again, Hansal is somebody so. Some 2 years back when I started podcasting and writing, I used to write articles also. I remember that was the time I interviewed Jigna Vora. Yeah, phenomenal. And the way she mentioned her story कि जेल में क्या हुआ था. किसने साथ दिया, the politician's name who gave her a complete support and everything. But when you listen to all these stories ना यार, कैसे manage किया होगा उसने उस time पर. Exactly. When a woman comes out and does her job fearlessly. Correct. And the whole system trying to frame her. Yeah. For JD's murder. Correct. We have come to end of our the podcast session, but there are 2-3 more questions before we go. I do not want कि ये conversation end हो, चलता ही रहे, मजा आ रहा है बात करके. Tell me one thing, if if you ever got this opportunity to switch your life with a politician, who it would be? Never? I love my life too much to switch. Yeah. I love my. वो एक लाइन है ना, मैं अपना फेवरेट हूँ. मैं किसी से स्विच नहीं करूँगा. मतलब बढ़िया लाइफ है मेरी. और कौन सा पॉलिटिशियन आपके साथ इतना फन करेगा? No. कोई नहीं करेगा. No. People will be always reserved and strict and proper. Yes. If you choose a political leader, right, choose one. From Congress, from BJP, and from Aam Aadmi Party, like who has these best political knowledge. Political knowledge in what context are you talking? History-wise or political knowledge, political acumen-wise? Acumen-wise, Aam Aadmi Party Sanjay Singh, without doubt. BJP se, I would think, I would say Amit Shah ji, but I also think Bhupender Yadav ji, because I think Amit Shah ji is the face, but Bhupender Yadav ji is politically very, very astute. Yeah. He manages things very well. So Amit Shah, Bhupender Yadav ji ka combination. And Congress se, agar aap bole to, I think Kamal Nath is very, very astute politically. वो मध्य प्रदेश अभी जीत रहे, as per me. So I would say Kamal Nath ji, and one who's not amongst our midst anymore, Ahmed Patel ji. Okay. I think Ahmed Patel was truly the original Chanakya of Indian politics. Okay. A fantastic and a great human being, and I really miss him. I was very, very close to him, and I miss him. So I think these were, and
if you see Bhupender Yadav ji, or you see Kamal Nath ji, or Ahmed Patel ji when he was there, or even Sanjay Singh ji, they're very decent people. They're very nice people. They're not rude, arrogant people. I think that's also another quality that I really like in these people. Yeah. But to be a better politician, like to be in the game, you need to be a mastermind in politics. I think mastermind is one part, but I think you must have an X factor in chemistry that connects with people. If you have that chemistry, no matter what, people will get attracted and connect to you. So I think very few politicians manage that. You must have that X factor to connect. But mastermind is one part. आप कितना manipulate करोगे? कितना करोगे? Ultimately, people have to like you, ना? आपने सारा manipulate कर दिया, अगर लोग ही आपको पसंद नहीं करते, आप जीतोगे कैसे? So ultimately, there has to be a like factor, an X factor. Okay, but you know, when we are talking about all these politics and all, but Maharashtra में there is this recent trend, or what we call the recent thing, the recent news that's happening. Ajit Pawar says that, you know, he's taking all the MLAs and he's gone with BJP and Eknath Shinde ji. Yes. So what do you have to say about this? Honest? Yeah, honest, of course. Honest thing. For Congress point of view, good, he's gone. From Congress point of view. And I'm very honest in my opinion. I come from Pune. Western Maharashtra is the bastion for the NCP. Yeah. NCP would always weaken Congress. And I would always tell people, if I ever contest Lok Sabha from Pune, I'm not afraid of BJP. BJP can't defeat me in Pune. But Ajit Pawar in NCP would work to defeat me. I'd always tell people this. Yeah. I mean, he's weakened the Congress. Okay. And, you know, now Delhi media is Ajit Pawar, he's gone with BJP. He always did all of this. In 2008 in Pune, he did something called the Pune pattern. Okay. When Congress and NCP was in an alliance in the city, in the state, and in the center. And Congress was in government in the center. He did something called the Pune pattern. Okay. In which he formed an alliance with BJP and Shiv Sena to keep Pune out of the municipal corporation, despite being an alliance. Yeah, he's always done this. Okay. So I have had no faith on these NCP people. Also, even now, I don't believe Mr. Pawar Senior did not know that Ajit Pawar is going. So for me, I've seen all this. And I just feel that it's terrible that Maharashtra politics, which was so progressive, is this way. But I mean, the NCP as a political party, as per me, doesn't have a political ideology. Its only ideology is power. Okay. So that's how it is. But it's good for the Congress because the Congress Congress was born in Maharashtra. The original Congress was born in Pune, then Pune, and then the first session was held in Bombay because Pune had the plague. Okay. So Congress was born in Pune, Agarkar, Tilak, Dadabhai Naoroji was from Bombay. Correct. So Congress was born in Maharashtra. It should be the most strong party in Maharashtra along with the BJP. That's good in Maharashtra's interest. It's good in the national interest. I'm very happy. So, but what about, you know, how good is the situation for BJP? बीजेपी का कोई फायदा है इसमें? बीजेपी का लोकसभा में फायदा हो सकता है क्योंकि they were not going to do very well in Maharashtra in लोकसभा. That was the recent polls that were showing. तो उसमें फायदा हो सकता है. लेकिन एक जिनका लिए मुझे बुरा लग रहा है देवेंद्र फडणवीस जी. वो बेचारे थे मुख्यमंत्री, फिर बन गए डिमोशन होकर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, अब 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर. तो उनका बेचारे का थोड़ा सा डिमोशन हो रहा है. बट उनके लिए ऑल्टरनेटिव करियर है क्योंकि हम बिग बॉस खेल रहे थे. वो अपनी वाइफ के वीडियोस में मॉडलिंग कर सकते हैं. So along with नहीं इसमें बुरा क्या, उनके अच्छे वो गाते अच्छे वीडियोस करते तो वो उसमें कर सकते. They can be deputy chief minister along with he can have an alternate career, so that's a good thing. Tell me one thing, if you were a historical king, who you would be, and what is that one quality that you would like to, you know, inculcate in your son? Historical king, I would love to be Akbar. Okay. Because Akbar had such a long reign, and when Akbar took over, he was the second richest man in the world. By the time he ended his kingdom, he was richest man in the world. Right. So, बढ़िया, richest man in the world, एकदम happily, बिरबल भी है, तानसेन भी है, enjoy करो. और ये औरंगजेब को सब गाली देते. अकबर तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. तो अकबर वो तो बढ़िया चल जाता है. तो अकबर. Okay. So Akbar I like, if I had been a king, long reign. One quality I would like Zirwan to develop is empathy. He should, I really want him to realize that he's blessed, he has privileges, and he should think about other people. Correct. So he should always think about other people. I think that's very important. So, and also, what do you think that, you know, the politicians have this one quality about Narendra Modi,
about his power, his tenure? What is that one quality people can learn from him? I think the one quality one can learn from Modi ji is never to give up. The amount of obstacles Modi ji faced in his life, and I'm not getting into the morality of good or bad, but the amount of obstacles he's faced from there to reach where he is and to be the Prime Minister for 2 tenures in India. Okay. I think it's phenomenal. So once Modi ji does put his mind to something, he does sort of deliver on that. So I think that's an amazing quality to learn from him. Yeah. So perseverance and not to get phased in the face of difficulties. Correct. He manages to sort of get away. So I think that's a good quality to have. Okay. Yeah. So let's have a quick rapid fire round, as you are into fitness. Let's end the show with a rapid fire round. Done. So tell me something, and you have to be really quick in this, okay? So quick. Done. Yeah? Okay. So how many steps are in a mile? Approximately 2,000. Yes. And would you do gymming alone, or you need a partner or wife? Partner or wife? First you decide. No. Okay, wife. Gymming with wife. Okay. Then घर जाके मार पड़ेंगे. If you How had double to... same gymming with wife. Okay. See, my answer is correct. Okay. If you had to take one politician to the gym, Rahul वो Gandhi. कौन होगा? Rahul Gandhi. Phenomenally fit and phenomenally strong. Okay. Love or gym? Make love in the gym. Oh my God, ये पूरा इसको ये hit हो गया. This podcast is a blockbuster. So thank you. But make love is like decently, है? मतलब प्यार की बातें करो. आप इसको गलत मत लेना. People लोग ले लेंगे जो लेना है उनको. People will understand. People will read between the lines and yeah. नहीं, why read between the lines? मैं तो कह रहा हूँ talk about love. हमें आपको मोहब्बत करना नहीं आता, हमें मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता. आपको मोहब्बत करना नहीं आता, हमें मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता. जिंदगी जीने के 2 ही तरीके हैं, एक आपको नहीं आता, एक हमें नहीं आता. वाह जी, वाह वाह वाह, बहुत खूब कहा. So thank you so much, Tehseen, for joining us, for your time. You have a very busy schedule, पर आपने time निकाला. Thank you very much. We had a lovely conversation, and I hope ये podcast जो है, ये episode जो है, हमें I mean we'll reach 1 million hits. We'll reach at least minimum. So thank you again. And once we reach 1 million hits, those we endorse from the show should send us the money, including Mr. Bagga. Please send us the money. Bagga has this biryani thing, which last time I tweeted about, I got trolled. Oh, yes. I know. Yes. So now that this podcast will become a hit and Bagga's biryani will get sold, he can send us biryani. Yes. So done. Thank you again. Thank you.